Hello dear friends, welcome back to my YouTube channel Learn English with NOOR. Dear friends, today we will be discussing another figure of speech, and that is antithesis. What? Antithesis. Okay. So let's discuss that what is basically antithesis. Okay. So first of all, antithesis is a figure of speech where two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect. Okay, and the literal meaning of antithesis is opposite. Antitheses are used to strengthen an argument by using either exact opposites or simply contrasting ideas, but can also include both. Okay, एंटीथीसिस जो है बेसिकली वो क्या है, एंटीथीसिस जो है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो है टू अपोजिट आइडियाज़ जो है वो एक सेंटेंस या फ्रेज में पुट किए जाते हैं. ठीक है, टू अचीव अ कंट्रास्ट इफेक्ट, यानी एक अपोजिट इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए. ठीक है, द लिटरल मीनिंग, इसके जो लिटरल मीनिंग है एंटीथीसिस के, वो क्या है, वो है अपोजिट. ठीक है, और बेसिकली ये यूज़ किए जाते हैं ताकि एक स्टेटमेंट, एक आर्गुमेंट, एक सेंटेंस को, एक आर्गुमेंट को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए. ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल जो है उसको हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक स्पीच इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्ड. इसकी ये एक एग्जांपल जो है हम ले सकते हैं. स्पीच इज सिल्वर, ओके, बट साइलेंस इज गोल्ड. ये जो है इसके हम ये एक एग्जांपल जो है वो, इसमें क्या है, इसमें जो है टू अपोजिट जो है वो मीनिंग ली गई. यानी एक क्या है, फर्स्ट वाले में स्पीच इज़ सिल्वर, यानी स्पीच जो है वो सिल्वर है बट साइलेंस इज़ गोल्ड, और साइलेंस जो है वो क्या है, वो गोल्ड है. ठीक है, इसमें हम एक अनदर एग्जांपल जो है वो ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और इसकी हम डिस्कस करते हैं, लाइक marriage has many fans. ठीक है, fans, but celibacy has no pleasure. ठीक है, ये जो है इसकी एक और एग्जांपल होगी. ठीक है, हम इसके एक और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल तो ये हो गई इसकी एग्जांपल. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे एक और फिगर ऑफ स्पीच को. उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो सी यू, टेक केयर, बाय बाय.